नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे मिनरल्स की। टुडे विल स्टडी अबाउट मिनरल्स। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So what are minerals? Minerals are solid, inorganic, naturally occurring substances having a definite chemical composition and crystalline structure. These are called minerals. These are the building blocks of rocks. कोई भी तत्व जो सॉलिड है मतलब ठोस है, नेचुरली अकरिंग प्राकृतिक रूप से होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड है और उसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। तो किसी भी तत्व को अगर मिनरल के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा तो उसको ये पांचों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी करनी होंगी। उसको सॉलिड होना चाहिए, उसको इनऑर्गेनिक होना चाहिए, उसको नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, लैब क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी डेफिनेट होना चाहिए और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसको हम कहते हैं मिनरल्स। और मिनरल्स से ही रॉक्स बना है। मिनरल्स के क्या प्रकार हैं? तो मिनरल्स के मुख्य दो प्रकार होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स और नॉन सिलिकेट मिनरल्स। जो 90% मिनरल जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो सिलिकेट मिनरल है। उसमें एक ग्रुप होता है SiO4 सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, वो पाया जाता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है और वो होता है सिलिकेट मिनरल्स। नॉन सिलिकेट मिनरल्स में सिलिकॉन नहीं होता है और सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड भी नहीं होता है। नॉन सिलिकेट मिनरल्स जो प्रकृति में हैं वो बहुत कम है, 10% होंगे क्रस्ट के, और उनके फिर 7 प्रकार हैं। एक होते हैं नेटिव एलिमेंट्स, फिर कार्बोनेट्स, फिर हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और सल्फाइड्स। So the minerals based on their chemical composition are categorized in 2 broad categories. One is the silicate mineral, which has silicon or silicon tetraoxide in them, and these compose about 90% of the Earth's crust. So the most widely found minerals are the silicate minerals. You see them everywhere. Then there are non-silicate minerals. These are less abundant in nature, and there are 7 classes of non-silicate minerals. They don't have any silica or silicon tetraoxide in them. So first class is native elements. Then comes carbonates. Then comes halides or halides, whatever you want to call them. Oxides, phosphates, sulfates, and sulfides. So these are the non-silicate minerals. Now we'll discuss each of them in detail. Silicate minerals. They compose, as I told you before, 90% of the Earth's crust. They have more than 1,000 varieties of silicate mineral in nature. These are the largest group of minerals. They have a silica tetrahedra SiO4 group in them. Examples are feldspar and quartz or sand. Sand is simply SiO2. You see sand everywhere. These are some examples of silicate minerals that you see in the images. Like this is a silicate crystal. Then this is a copper silicate mineral. Then comes the non-silicate minerals, so native elements. These are rare elements. These are rare minerals, and they are composed of only one element. Examples are gold, silver, even diamond, and sulfur. These are rare in nature and noble, non-reactive. Metals often exist as a native element. Here, the crystal that you see here is yellow. It's a sulfur crystal. Carbonates. The carbonates have a basic building block. That's the carbonate group, CO3, and the valency is 2-. One carbon atom bonded to 3 oxygen atoms. That's the carbonate group. The carbonate group is bonded to a cation. Cation is a positively charged ion, and it's usually a metal. So calcium carbonate, or commonly called calcite, that's a carbonate mineral. You can see a crystal of calcium carbonate here. It's always white. Halides or halides, whatever you want to call them. These are salts that form from naturally occurring salt water. These are ionic minerals, also called evaporites. These are called evaporites because they form as a residue when water evaporates. So the chemical elements that are found in the halide minerals are called halogens. And there's a halogen group in a periodic table. We all have studied periodic table in our 9th, 10th, 11th and 12th standard.
So the halogen group comprises chlorine, fluorine, iodine, and they bond with metallic atoms to create a halide mineral. Like example is halite or common salt, NaCl, sodium chloride. So that's a halide mineral. Then there is an oxide mineral, very interesting mineral. There are always one or two metallic elements and bonded to oxygen. Oxygen से bond हुआ, oxide हो गया. इसके पहले वाले को मैं फिर से हिंदी में भी बता दूं. So halide जो होता है वो सॉल्ट है, सिंपली पानी उड़ गया और नमक बच गया. और ये जमीन के अंदर भी ये प्रक्रिया होती है. जमीन के अंदर जब रेन वाटर या कोई और पानी सीपेज होता है और सॉल्ट और पानी उड़ जाता है और सॉल्ट रह जाता है, तो वो जमीन के अंदर भी से भी नमक निकलता है, तो वही है. तो वो हेलाइड मिनरल है. इसमें एक हैलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, हैलोजन ग्रुप पीरियोडिक टेबल में होता है. क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. ये किसी मेटल एलिमेंट के साथ बॉन्ड करके और हेलाइड मिनरल बनाता है. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, दिस आर हेलाइड मिनरल्स. ऑक्साइड्स, जब कोई मेटालिक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है तो वो ऑक्साइड मिनरल बनाता है. जैसे हेमाटाइट Fe2O3, इससे आयरन एक्सट्रैक्ट होता है. So oxide mineral is formed when one or two metallic elements bond with oxygen. For example is hematite, Fe2O3, from which iron is extracted in the industry. Then comes phosphate mineral. As the name itself indicates, phosphate minerals have phosphorus, but they have a phosphorus tetrahedra. Just like SiO4, this is PO4. And it's a relatively rare mineral and it has a phosphorus tetrahedra. And you can see this is the chemical group. A commonly found phosphate mineral in the human bones is apatite. तो phosphates जो होता है उसमें phosphorus होता है, PO4 ग्रुप होता है, और सिलिकॉन में जैसे SiO4 होता है इसमें PO4 होता है. और हमारी हड्डियों में जो phosphate mineral पाया जाता है उसको कहते हैं apatite. सल्फेट्स, जैसा कि नाम से पता चलता है सल्फर होता है इसमें. Similar to the silica tetrahedra, there is a sulfur tetrahedra found in sulfates. S04 होता है इसमें. तो SiO4 सिलिका में होता है, phosphates में PO4, sulfates में SO4. तो ये सल्फेट मिनरल है. It is formed when salt water evaporates. तो जब salt water उड़ जाता है तो जो बच जाता है वो है gypsum, calcium sulfate dihydrate. ये जिप्सम है. जिप्सम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है और कंस्ट्रक्शन में दीवारों को चिकना करने के काम में काफी आता है. नायका केव, क्रिस्टल केव जो मैक्सिको में है, वहां पे बहुत खूब सुंदर जिप्सम की गुफाएं. गुफा के अंदर जिप्सम के खंबे हैं, ऐसे 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 गुफा के अंदर जिप्सम के खंबे हैं. तो वो बहुत सुंदर लगता है. नायका केव्स में वो है. तो वो बेसिकली जब नीचे से पानी जब उड़ गया तो सिर्फ जिप्सम बचा, सॉल्ट बचा, और वही उसी से वो केव बन गया. ये एक बहुत ही खूबसूरत जिप्सम का क्रिस्टल है. ये दूसरा जिप्सम के क्रिस्टल्स हैं. ये बस ये आपको दिखाने के लिए कि नेचर में जो एक सॉल्ट के क्रिस्टल हैं वो दोनों जिप्सम के ही क्रिस्टल्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों के रंग में जरा फर्क है. तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा लेकिन फिर भी रंग में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये बना है, अलग अलग परिस्थितियों में बना है. ये देखिए नायका केव जो मैक्सिको में है, पानी सारा उड़ गया और ये जिप्सम के इस तरह से खंबे और जिप्सम के डंडे पूरे केव्स में है. और ये देखिए यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है. ये केव्स कितनी विशाल है कि यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है. और ये सब जिप्सम के डिपॉजिट्स हैं नायका केव्स में, जो कि मैक्सिको में है. अब एक और मिनरल ग्रुप है सल्फाइड्स. इसमें भी सल्फर होता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है. सो मेटालिक एलिमेंट्स आर बॉन्डेड विद सल्फर विदाउट ऑक्सीजन. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सल्फाइड्स. That's the difference between sulfate and sulfide. Sulfate exists as SO4, but sulfide exists only as S. So there is a lack of oxygen in sulfides. Metallic elements are bonded with sulfur without oxygen. Example is pyrite, FeS2, or fool's gold. जिसको भी so example है pyrite, FeS2. इसको हम fool's gold भी कहते हैं क्योंकि ये चमकता तो है पर सोना नहीं है. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इसमें चमक है पर ये सोना नहीं है, तो ये FeS2 है, fool's gold. अब देखने वाली बात ये है कि ज्यादातर जो मिनरल्स हैं, सिलिकेट मिनरल्स जो कि अर्थ प्लस का 90% है उसमें भी, और नॉन सिलिकेट मिनरल्स में बहुतायत मात्रा में मिनरल्स में ऑक्सीजन का कोई ना कोई एटम जरूर होता है. तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है सबसे कॉमन, सबसे आराम से, सबसे ज्यादा, सबसे बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट हो जाता है क्रस्ट. एंड दैट इज व्हाई, सो एज वी कैन सी, oxygen is present in silicate minerals which compose 90% of the Earth's crust.
Also, in most of the non-silicate minerals, oxygen is bonded as an atom. So oxygen atom is present in most of the substances in nature, and it composes the bulk of the crust and the lithosphere. And thus, oxygen is the most abundant element in the Earth's crust, followed by silicon. मिनरल्स की कुछ खासियत, क्यों मिनरल्स के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं भाई? मिनरल्स को हम सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कलर, उसके शेप, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और हार्डनेस के आधार पर भी बांट सकते हैं. So minerals can also be classified based on their color, their shape, crystal structure and hardness. Minerals come in all colors. They can be white, yellow, black, red, green. Their shapes can be regular, like diamond and aragonite, or irregular, like malachite or malachite. Every mineral has a unique crystal structure. We know that. That's the uniqueness of every mineral, that it has a unique crystal structure. And the crystal structure of the mineral is responsible for the unique physical properties, its taste and odor of the mineral. Minerals have variable hardness depending upon their crystal structure. That's true. Because we can take an example of diamond and graphite. Both diamond and graphite have the same chemical composition. But diamond has a different crystal structure and stronger bonds, while graphite has a different crystal structure and relatively weaker bonds. And that is why diamond is the hardest substance found in nature because of its unique crystalline structure. Whereas graphite is a very soft substance compared to diamond because of a different crystal structure. So crystal structure determines the hardness and physical properties of a mineral. Mohs scale, M-O-H-S, Mohs scale is used to measure mineral hardness. Diamond, having a hardness of 10, is the hardest mineral, and talc, having a hardness of 1, is the softest mineral. Diamond की ज्वेलरी और अंगूठियां बनती हैं, हम सब जानते हैं, बहुत हार्ड है, जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए हम उसकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी बनाते हैं. और टैल्क बहुत ही सॉफ्ट है, उससे टैल्कम पाउडर बनता है, और जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, हम सब जानते हैं. Apatite at 5, apatite is in the middle of the Mohs scale between diamond and talc with a ranking of 5, and it's found in the human bones. It's somewhat hard, but not a very hard mineral. Apart from Mohs scale, scientists also use Vickers scale to measure hardness of minerals. तो मिनरल्स का जो हार्डनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से होता है. डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, एंड उसकी वजह से, उसके यूनिक बॉन्डिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से वो जो डायमंड है वो दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है. ग्रेफाइट में भी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है, पर उसका जो बॉन्डिंग है और उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसकी वजह से ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरिजन में एक बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस है. हार्डनेस, जो मिनरल हार्डनेस को मेजर करने के लिए एक मोह स्केल यूज होता है, और उस स्केल में रैंकिंग 1 to 10 है अगर, तो 10 पर डायमंड है जो हार्डेस्ट है, और 1 पर टैल्क है जो टैल्कम पाउडर है, जो टैल्क है मिनरल, और उस टैल्क से टैल्कम पाउडर बनता है. एपेटाइट जो कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है, उसका उस मोह स्केल पे उसकी रैंकिंग 5 है, मतलब वो बीच का मिनरल है, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट. साइंटिस्ट विकर्स स्केल को भी इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स की हार्डनेस को मापने के लिए. ये एक एग्जांपल है मोह स्केल का. देखिए 1 है डायमंड, 2 है जिप्सम, 3 कैल्साइट, 4 है फ्लोराइट. फ्लोराइट जो है वो एक मिनरल है, उसको टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो दांतों के लिए अच्छा होता है, तो टूथपेस्ट में उसको इस्तेमाल किया जाता है. एपेटाइट हमारी हड्डियों में होता है. ऑर्थोक्लेज फेल्सपार है. क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज से घड़ियां बनती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो. टोपैज है, जेमस्टोन है. कोरैंड्रम है, फिर डायमंड है. तो डायमंड का रैंकिंग 10 है, और 1 पे talc, sorry, diamond is on the 10th rank, and on the, which is the hardest on the Mohs scale, and on the first rank is talc, which is the softest on the Mohs scale. After talc comes gypsum, calcite, fluorite, apatite, orthoclase feldspar. Quartz, we all know quartz are used for making quartz watches. Topaz, another mineral. Corundum, diamond. So that's the Mohs scale, and you see pictures of each element, each mineral: diamond mineral, corundum, topaz, quartz crystals, orthoclase feldspar. That's the
Every mineral has its, this is the Mohs scale with ranking, name, chemical composition, and this is the picture of each mineral, how each mineral looks. That's how talc looks. It can be like broken into very, very fine powder, the talc mineral. Then gypsum, calcite, the calcium mineral, chloride. Now the question arises, we know much about minerals now. Can diamond be considered a mineral and not coal? Like people consider diamond a mineral but not coal. Why is that? Diamond तो मिनरल है लेकिन कोल यानी कोयला मिनरल नहीं. क्यों नहीं है? डायमंड यानी कि हीरा जो है सॉलिड है, इनऑर्गेनिक है, डेड है और डेड सब्सटेंस से ही बना है. सॉलिड, इनऑर्गेनिक, हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और यूनिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और नेचुरली ऑकरिंग है. क्योंकि ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सारा जो क्राइटेरिया है, सारा जो मानदंड है, वो डायमंड फुलफिल करता है, हीरा उसको पूरा करता है. तो वो एक मिनरल है क्योंकि जमीन के अंदर से निकलता है, नेचुरली ऑकरिंग है, और कोयला जो कि डेड है उससे बनता है. इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी फिक्स्ड है, सॉलिड भी है, इनऑर्गेनिक है, कोई प्लांट ओरिजिन इसमें इन्वॉल्व नहीं है. तो डायमंड एक हीरा है. कोयला हीरा क्यों नहीं है? कोयला भी नेचुरली ऑकरिंग है, कोयला भी सॉलिड है, कोयला का भी फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है, सॉलिड भी है, नेचुरली ऑकरिंग भी है, फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन भी है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं. कोयला खुद तो डेड है, खुद तो मृत है, लेकिन कोयला जो बना है वो हजारों वर्ष पहले जो धरती के अंदर प्लांट्स और ट्रीज, पौधे और पेड़ दब गए थे, उस वही ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो सूख के कोयला हो गए, और हीट और प्रेशर की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ और वो कोयला हो गए. तो कोल का जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक है, और जस्ट बिकॉज कोल हैज एन ऑर्गेनिक ओरिजिन, कोल इज नॉट कंसिडर्ड अ मिनरल, बिकॉज thousands and millions of years ago, when plants and trees were buried within the earth's surface in the lack of oxygen under heat and pressure, they became coal. So coal has an organic origin, a plant origin, and it's not considered a mineral. Whereas diamond originates from coal, and coal itself is dead. Although coal has an organic origin, it itself is dead. So diamond has its origin in a dead thing, which is coal, and that is why diamond is considered a mineral, but not coal. Uses of minerals. Gypsum, calcium sulfate dihydrate is used for the construction of is used in construction for plastering. Gypsum plus water is equal to plaster of Paris. यहाँ पे मैंने केमिकल जो इक्वेशन है इसमें हीट मिसिंग है, तो जिप्सम और पानी को मिला दिया जाता है और उसको फिर सुखा दिया जाता है, तो फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, which is calcium sulfate hemihydrate. तो बेसिकली दोनों के केमिकल फॉर्मूला में बस इतना ही फर्क है कि ये डाइहाइड्रेट है जिप्सम, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हेमीहाइड्रेट, तो बस पानी ही सूख जाता है. मैग्नेटाइट आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है, हम सब जानते हैं. गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सब ज्वेलरी बनाने के काम आता है, सभी मिनरल्स है. फ्लोराइड टूथपेस्ट में यूज होता है. टैल्क टैल्कम पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, और जेमस्टोन्स के तौर पर तो मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, और सिर्फ जिप्सम ही नहीं, सिलिका जो होता है, सिलिकेट मिनरल्स, वो हमेशा ही कंस्ट्रक्शन में, बालू SiO2 सिलिका, वो हमेशा ही कंस्ट्रक्शन में, रेत जिसको कहते हैं, तो वो रेत कंस्ट्रक्शन में यूज होती है. सो मिनरल्स हैव क्वाइट अ फ्यू यूजेस इन आवर लाइव्स. वी सी मिनरल्स ऑल अराउंड अस एंड वी कैन नॉट डू विदाउट मिनरल्स. Gypsum is used in construction for plastering. Gypsum plus water is equal to plaster of Paris. How? Gypsum is calcium sulfate dihydrate. So we mix gypsum with water and then we allow it to dry. And when gypsum dries, the dihydrate is reduced. The water is reduced from it and it becomes calcium sulfate hemihydrate, and that's plaster of Paris. Magnetite, another mineral, is used to extract iron. Then there's gold, platinum, silver. These are used to make jewelry. Fluorite is used in toothpaste. And talc, the softest mineral, is used to prepare talcum powder. Then minerals are used as gemstones. So we have quite a few uses of minerals. Another point, an interesting point that I wanted to include in this video, I have mentioned it before in my previous video called Rocks. That's lecture 7. So minerals are everywhere, but we cannot extract minerals from everything, all the rocks. Minerals are the building blocks of rocks, but we cannot extract minerals from all the rocks. Because some rocks, the rocks which have a huge composition of one particular type of mineral,
in available form, those are called ores. So basically all ores are rocks, but all rocks are not ores. Ores are rocks from which minerals can be extracted. Ores are rocks in which minerals are available in, minerals are present in available extractable form. Those are called ores. Like there's iron ore, there's calcium ore, like that. So ore वो rocks होते हैं जिनसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. हर रॉक में मिनरल होता है, लेकिन हर रॉक से मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. वो रॉक्स, वो पत्थर जिससे मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आसानी से, उनको हम ओर्स कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ जो जरूरी मिनरल्स हैं जो जिसकी हमें जरूरत है, जैसे हेमाटाइट का मिनरल है, वो उसमें बहुतायत, उसमें मेजॉरिटी में बहुतायत मात्रा में उस पत्थर में प्रेजेंट है. हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं केमिकल प्रोसेस से, उसको हम ओर्स कहते हैं. So all rocks from which minerals can be extracted are called ores. मिनरल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई कमी रह गई है या कुछ त्रुटियां हैं इस वीडियो में, या आपके पास और कोई सवाल है, या आप और कुछ जानना चाहते हैं मिनरल्स के बारे में, तो मुझे जरूर बताएं, और आपके सभी सवालों और सभी शंकाओं का मैं जरूर समाधान करूंगी. विद दिस, थैंक यू. जय हिंद एंड जय भारत.